and YouTube places. You can see all these sponge dabbers. You get set of 4, set of 5. सिंगल आप लेने जाओगे तो थोड़ा महंगा होगा. सेट लोगे तो आपको 50-60 Excuse रुपए me, में मिलना चाहिए. इससे ज्यादा अगर and your voice is breaking, and video is also pausing. इसमें से मैं कौन actually सी there's यूज no करूं? problem. There's no problem at my end now. Can you please rejoin? सब लोग आ जाओ. I'll wait for 2 minutes. मैम मैं इसमें से कौन सी बोतल यूज करूं? प्लेन सरफेस वाली इस्तेमाल कीजिए. वो डार्क चॉकलेट लिखा था वो वाली ठीक है, क्योंकि उस पे कोई सरफेस चेंज नहीं है. एंड द फर्स्ट वन ऑल्सो इनोवा लिखा है क्या उस पे क्या लिखा है? हाँ, वो दोनों इस्तेमाल कर. ओके मैम. Now, first, this kind of art you can actually use the Coca-Cola and Pepsi bottles that you get, because they have nice plain surface. Only the thing is, if you use the Bisleri bottles and all, they have the layers. छोटे छोटे उसमें surface changes होते हैं. So it's not easy and it doesn't look very pleasing. So avoid those Bisleri bottles. Choose bottles which are like okay, इनके जो surfaces हैं वो straight away हो. You will get more area to apply color properly. अगर ऐसे कुछ अभी ये जो ब्रांड है उन्होंने ब्रांडिंग के लिए ये सारे लेटर्स इस पे ऑलरेडी इंस्क्राइब किए हुए हैं. So this we cannot avoid. This is going to be there as it is. So choose as much as plain surface which you. And then I was telling you about this sponge dabbers. तो 100 रुपए के आगे अगर आपको 5 या 6 का सेट मिल रहा है, then don't buy that. That's very costly. Actually ये sponge आपको cleaning sponge जो मिलता है छोटा, you can buy it for 20 rupees only and you get this long chunk. तो brick जितना size उसका होता है, तो already वो बड़ा आप use कर सकते हो. If you want this particular size, because sometimes we want to make dots, we want to make circles in colors. So then this is useful. Yes, Pramila ji, exactly that. I'll just highlight you. Pramila ji, you can just see her sponge that she's having. That's the one you can use. Could you please show? Pramila ma'am? Yeah, see, that one is the large one. You can use it. It's cheap and easily available, and you can throw it away after 2-3 uses. So instead of cleaning it again, because this is really tedious to clean up. Also, I got another alternative for that. You get this small sponge dusters for your slates in stationery shops. Okay, जो बच्चे slate के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए sponge मिलता है. This costs only 5 rupees, so you can use this. One time use के लिए चल सकता है. So you can use this also. And this is for there only. You get larger also. And you have sponge rollers also, and there's a lot of variety in the sponge dabber category, so you can explore it on your own. Now, we will start applying color to this. Now, if you want to mix 2-3 colors together and you don't want each color to mix into each other, what I'm going to do is, I'm going to put a cello tape here. Masking tape is preferred. Cello tape चल सकता है क्योंकि bottle से आराम से निकल सकता है, but masking tape is what we prefer. So you can stick it wherever you want the differentiation. Okay. So masking tape ऐसे होता है. You have the brown masking also that can be used, but for some surfaces it may not work. So I am putting it here. If you want to mix 2-3 colors, you can put it at different levels. Circular कर रही हूँ मैं. ऊपर की तरफ एक कलर दूंगी, नीचे की तरफ एक कलर. Now bottles are cylindrical, so it's easy for us to match the levels. So not an issue. And थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा तो चल जाता है. If you want exact points, you can take a ruler and mark like
15 centimeter 1 point here and 15 centimeter 1 point here, then it will be easy for you to seek the level. Okay, ऐसे बीच में मैंने ये masking लगाया है. Okay, now whenever you're going to apply color here, choose colors. If you're going to put lighting inside, then choose light colors. And if you don't want to put lighting and anything inside, then you can choose dark colors. Okay, सिर्फ show के लिए रखना चाहते हो for flowers and all, you can put flowers from this whole 2-3 stakes or dry arrangement, anything that can be used. So you can use dark colors for that. And if you're going to use lighting inside, then use light colors. So Ma'am, I'm can I using use this bottle, ma'am? which one? This Yeah, bottle, yeah. ma'am. Two. Can I use? Yes, Okay, ma'am. yes. This or this, ma'am. Actually, white is good. You can use white for other pattern that we are going to do because you will save the time for applying white coat. Okay. Now this I can use, ma'am. Yeah. Apply color to this one, transparent one. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Anybody else wants to show bottle before I start? Once I start, then I won't be able to answer your queries immediately then until I finish my coat. Oh. I assume everybody is able to hear me. Dia, can you hear me now? Yeah, okay. Yeah, that's very nice bottle should be. It will finish in time actually, proper time. Though you will have little less area for exploring, but it's good for practice. Now I'm going to take little yellow, and white is something that everybody loves. I'm thinking to use white, but I'm not sure. Let me apply yellow first. So you can take your palette, or you actually need little more surface rather than palette. So you can take a dish or something. And if you don't have bottles and all, what you can do is you can take a disposable glass or something for just, getting the hang of the art form. It's not actually a specific art form as such, but too many people explore this because we have so many bottles left and we love to recycle, right? We see the reduce, reuse and recycle triangle all the time. So art ke liye aur kya chahiye humko? We needs all this to explore. Now I'm using this one. Take color. Very little quantity is needed. You don't need to take much color all the time. And don't mix water at all. Okay. Start applying from whichever end you want. No hard and fast rules for this. Just see whether the bottle is getting the color properly or no. If your color is too thin, add little white to it so that, or you can add gesso also so that the color gets fixed easily. Ma'am, Yes. your voice was not available. So in my computer, so I have rejoined. So I don't know what have you done now. I have just started with a bottle. I have put a masking tape here. So half part of the bottle, we are going to apply one color and half part other color. I'm using a sponge dabber here. Ma'am, Yes, say it. so we have to apply it over here, and over here we have to apply the tape. 1 second, let me see. Yeah, that's fine. Okay, ma'am. So now we have to sponge it. I'm using the sponge, ma'am. Yeah, perfect. Use only one side for one color. Okay, don't mix 2-3 colors in one place. Okay, It has ma'am. many sides, so you can you can use it different. Okay, ma'am.
if your color is very thin, you can add little gesso to it. Okay. Sometimes yellow and white are little thin as compared to other colors. And if you want the color of bottle to be seen, like thoda transparency आपको रखना है, तो थोड़ा दूर दूर करो. And you can apply 2-3 coats, not an issue. For fine, like you have to tap nicely. अच्छा pressure से उसको करना है. And we have to remove the lid also. Which lid? The lid of the bottle. Yeah. You can keep it as of now, no problem. It will be While easier coloring, you for can to color hold over that it. way. Okay, got it. Thank you. Like, yeah, you can remove it, no problem. Using sponge can give you nice texture, so it is a good way to use. Also, if you are don't have any sponge, you can use flat brushes and also paint it. No, it's not that you cannot use brushes. Only the thing is the strokes are not even when you use a brush. Okay, then you will need 2-3 coats for like fine coat. For sponge, you can see nice texture and you will enjoy it. So this is a better option, I feel. जोर से टैप करना ताकि कलर अच्छा फैलता रहे उसपे. Now this is a green bottle, so it's not going to be transparent. So after drying, maybe I can put another coat in case it doesn't cover the entire area properly. Now see, in such areas, it's difficult when you have a lot of curves, then use only the tip part. Because it's difficult to apply color on the curvy surface. Takes time to dry. For some parts, you can put your sponge from below, like this direction, niche se upar. Generally, we do it like this. Some parts it may not touch properly because there are a lot of curves in bottle. Take color only in the sides and then try to put the remaining portion. You don't need much color though for this application, so it's a good thing. If you want to add another color to this, like little shades आपको create करने हैं, you can add other color while it is wet only. Don't let it touch the surface below. अभी ये मेरा roll हो रहा है, तो I'm feeling it little difficult. If you have something to keep below, it's better. Okay, so that it doesn't touch and you can roll it easily. We'll try to mix little orange. One thing, whenever the coat is wet, if you just touch or scratch it, immediately the color will come up because the glass doesn't really absorb color as such. So be little careful there.
Now I'm taking little white. Oops. निकल गया भगवान. I had no plan to apply white here. Actually, it's looking better. Let one coat settle for like 10-15 minutes, then you can apply other coats so that the other next coat will be finer. नहीं I'm putting one finger in the bottle neck. ऊपर से पकड़ा हुआ है मैंने बॉटल को एंड नीचे से मैं ऐसे कर. We have मैम आप 1 ये hour. सेम कलर यूज कर रहे हो बॉटल पे Ma'am, I can have we put taken white. white Or- down? Ma'am, we have to put white down. Yeah, you can take any color of your choice. तो मैं ये यूज कर लूँ. तो उसी कलर में थोड़ा व्हाइट मिक्स किया Colors of your choice. You can use any color of your choice. See, I've taken ऊपर का पार्ट येलो व्हाइट मिक्स किया है और थोड़ा सा ऑरेंज भी है. नीचे का व्हाइट ऑफ लेमन सब मिक्स कर रही हूँ कलर्स में. Let this surface dry little bit, then rotate कर दो या फिर नीचे का पार्ट एंड में कर देना क्योंकि कलर नहीं तो लगता रहेगा सब जगह पे. You mix lot of like 2-3 shades of same color, थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट ऐसे भी कर सकते हो. It looks nice. शेड कार्ड की ग्रेडेशन जैसा. Yellow and white are colors that can accommodate other colors on them. So giving light color as your base coat will always be easier for you. You can mend anything later in that. If you अगर पसंद नहीं आया तब उसमें changes कर सकते हो. लेकिन अगर अपने डार्क कलर बहुत पहले सारे ले लिए तो it will be difficult for you to change anything if you want to. So this coat is good for drying now. कहीं कहीं पे अगर कलर्स बाकी हैं तो वहां पे बस हम कलर कर देंगे.
I'm using little yellow here for wherever there are little gaps or something. Keep on rotating the bottle and don't move your hand. Okay? तो ये आसान रहता है आपके लिए कलर अप्लाई करना. You get those Chinese lighting strings that you can use here inside the bottle. Looks very pretty. It can be a night lamp also. Just let the coat dry and then you can apply little coat another coat if you want to later. कोई भी सरफेस आप खुला मत छोड़ना. ओके यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे स्क्रैचेस आए हैं where you can see little transparent effect. So apply more color there and mix little white in case it's not getting fixed easily. Now I'm going to take out the masking tape because I want to merge two colors there. जैसे आपने acrylic painting के लिए blending किया था, like that we have to blend the two sides. If you want a clear demarcation, अभी मैं धीरे से निकालूंगी. अगर आप थोड़ा ड्राई रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो. Slowly take out. See, it looks so good. Nice. To handle this glass bottle, that's another task. डर रहता है कि बड़ा है बॉटल थोड़ा तो निकलना चाहिए. इतना जाए. You can see shades here. And if you want to keep this effect, ये क्योंकि ये shades में जाता है green, तो आप वैसे के वैसे रख सकते हो. Now I want to merge it. So what I'm going to do, I'm taking little orange red mix. Or you can take if you want to keep the same effect, you can keep mixing little orange here. Is it visible to you? See like this. मैं mix करते जा रही हूँ. Orange and red orange mix. जो already color वो था, so that it will merge in both the layers. For proper blending, you can again mix the color and give another layer. अभी मेरे ख्याल से ये मेरे लिए काफी हो रहा है. Too much will be like, see, very subtle transformation you can see. It's very pretty. ड्राई होने के बाद और एक कोट आप दे सकते हो तो ज्यादा फाइन दिखेगा. अगर ऊपर थोड़ा सा आपको कहीं पे ऐड करना है तो आप कलर ऐड. The key to fine application of color on this bottle surface is very less use of color. Okay, जितना आपका थोड़ा सूख जाएगा ना कलर वो अच्छा उस पे अप्लाई होता है. गीला कलर उस पे अप्लाई नहीं होगा. It tends to come out very quickly. Now we'll let this dry. सबके हो गए हैं पहले कोट. Can you all just show me what kind of colors have you used?
Now, bottle नीचे का surface आप क्या कर सकते हो? You can keep this bottle on a height like this. Hold it with one hand and then apply rest of it. Ma'am, I'm having only these two colors, ma'am. What can I do, ma'am, for merging? With two colors. Yeah, I applied no, ma'am. Pink and green. Okay. Do you have little white? No, ma'am. I thought two colors are enough and I bought only two and came, ma'am. Okay, then what you do, you bring pink little down, pink का थोड़ा सा और नीचे लाओ and mix both of them into each other. And if Okay, ma'am. Okay. clear line, you can okay, keep ma'am. clear line. Yeah. Ma'am, should we take off our between masking tape and we have to merge it? Yeah, it's better if you merge. If you want to keep it clear, transparent रखना है आपको, then you can keep it as. Okay, ma'am, अगर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं merge, जैसे यहाँ आया थोड़ा lines you can, बना सकते हैं. yes, absolutely. जो चाहे आप colorful combination, you can play with the composition, no problem. Okay, ma'am. Okay, very nice combination. It's Diya or Dishti? दिया और दिशा में दिशा, sorry. गुरु मूवी में वो दिशा दृष्टि थे ना, तो वो मुझे ट्विन जैसे याद है. Just don't leave any surface. Okay. Feels so nice actually, you know, जो boring bottle कप की पड़ी हुई होती है, अच्छा दिखता है एकदम से. White actually looks beautiful. And the colors you all have chosen look very interesting. Pink, green, yellow, pink. I love the combination. And I'll give you 5 minutes till you complete the first layer. I'll give next coat once after like half an hour. For acrylic, actually, if it was summer, then अभी तक ये सूख भी गया होता. But क्योंकि अभी rainy season है, it takes time to dry. So give it its time. जल्दी मत करना, क्योंकि otherwise वो color उल्टा निकल जाता है. It doesn't stay then. Ma'am, is it okay, ma'am? Sure. Yeah. Wow, nice shades. All vibrant. Very good. Thank you, ma'am. Srilekha ji, I was telling you that. Pramila ma'am, हाँ, आपका भी अच्छा है. Pink and green. Nicely merged. Which pink is that? What's the name of shade? Brilliant purple or pink? Who else has finished? Okay, all warm colors should be nice. You can actually keep the transparent layer as it is ना, उसमें कुछ अगर रखना चाहते हो तो अच्छा दिख रहा है. Yes, ma'am, मुझे भी ऐसी अच्छी लग रही थी ये. हाँ. Now let it dry.
Who else has done? Ria, what's up? Ma'am, I'm doing the shading. I said Ria, not Dia. Okay, ma'am. I'll just show you one small powder, talcum powder pack tabba which I had done. I think you must have seen in status also. So this is very small, and I just did little flowers. So it was very interesting process for me because these colors were actually left in my palette after one session of dot art, and then I didn't want to throw the colors, so I used all of them to apply color here. So none of the color was wasted. That was my satisfactory point. And then जो white color था वो भी थोड़ा बचा हुआ था. So I made these flowers. So you can make simple art forms with your Fevicol bottles. We have so many of them. Then you have these bottles also. After they are finished, they are very cute bottles actually to recycle. The shape is also pleasing and it has a wide lid. So you can use that also. Then so many bottles which are actually very, very usable, reusable that is. And at least you can keep your dry art supplies in them like beads, mirrors, all this stuff you can keep. So you'll also feel nice and colorful about your stuff. You've created everything on by yourself. So it's a nice and satisfactory thing to recycle, reuse. Now it's called upcycle. That's a different thing. But yeah. Sometimes I used to feel that अब ये इतना पुराना हो गया है इसमें और खर्चा क्यों करना है like you know, but nowadays so we have acrylic colors most of the time at home, so we don't need to actually buy them and do it. जो घर में है उसी में से करेंगे तो it looks better that way. Okay, I hope everybody is done with first coat. Now everybody has one more bottle. Most of No, you have one. ma'am. ओके देन जिनके पास सिंगल है वो रुक जाइए कोट सूखने तक. जिनके पास और एक बॉटल है वो बस एक आइडिया में अभी दिखाऊंगी आपको. जब तक वो पहला लेयर ड्राई नहीं हो जाता वी हैव टू वेट. सो टिल देन आई विल शो यू वन स्मॉल idea on this one. Okay, small scale, I mean, not small idea. Now whatever shape of the bottle you can keep, use a masking tape. Now you all must be knowing the stencil effect, right? जो पार्ट हमको कलर नहीं करना है that we will be covering with masking. So you can use any random lines. Okay, कैसे भी आप चिपका दो, no problem. टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी spaces form होंगे, we will go on sticking the parts like that. Use all slants, straight lines, mix of everything. Don't make too many small parts to be created. जैसे छोटे छोटे triangles हमको नहीं चाहिए. We need a little larger surface to be created. So we कैसे भी लगाओ टेढ़े मेढ़े. सर्कल आप लगाना चाहते हो, वर्टिकल लगाना चाहते हो, छोटे पीस कट करके लगाना चाहते हो, कैसे भी लगाते जाओ. Now I've taken white bottle purposely because white पे अच्छा दिखेगा. You don't have to cover the bottom part. कहीं पे overlapping हो रहा है तो it's okay. You also get acrylic markers which you can use directly on your coated bottles.
Ma'am, can you have acrylic marker? Can you show? Sorry. Do you have acrylic marker? Can you show, ma'am? Yeah, sure. I will show. अगर कोई ऑड सरफेस लग रहा है, जैसे एक बड़ा हमको एटलीस्ट साइड्स जिसके प्रॉपर आए वैसे हमको शेप्स चाहिए, तो छोटे छोटे एरियाज मत क्रिएट होने देना, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू लाइक रिलेट. Okay, I think these are enough for now. If you want little more, you can add afterwards also, not an issue. एक्सेस जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे कट कर. You can use stencils also. You get ready-made stencils nowadays for this type of arts. You can मतलब हमारा जो फर्नीचर होता है पुराना, अगर कोई स्टूल है या फिर टेबल है जो आपको ऐसे अपसाइकल करना है, वो आप अच्छी तरह से चॉक पेंट यूज कर सकते हो. You can use acrylic colors and you get stencils ready-made and you can just apply texture paint over it. तो उसमें जितना आपको डिजाइन चाहिए उतना ही आपके सरफेस पे आएगा. रेस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पेस्ट जो है आप निकाल लेना एंड देन इट सेट्स वेरी नाइसली. तो दैट इज टेक्सचर पेंट यू गेट फ्रॉम आई क्राफ्ट. स्टेंसिल्स वहां पे आपको वो साइट पे मिल जाएंगे, आई क्राफ्ट स्टूडियो. दे हैव नाइस अपसाइक्लिंग मटेरियल्स. stencils है, chalk paints है, texture paints है, and etc etc. I'll just show you what I was saying, acrylic paint, right? Okay, so these are acrylic markers. ये ब्रूस्ट्रो के हैं. These are like black, white, golden and silver. ये 4 का पैक आता है. तो इसका प्राइस अराउंड 300 है कुछ तो. Find the price here. You can use it directly on your surfaces. कोई भी आपका, जैसे अभी ये बॉटल है, if I want to use it. You have to press the tip little bit till the color flows in. ये इसका थोड़ा नया है तो I haven't used the silver color Ma'am, yet. liquid acrylic color fill किया हुआ है. Sorry, I couldn't hear you, Surbhi. मैम इसमें लिक्विड कलर फिल किया हुआ है, यही स्केच की तरह चल रहा है. मैं हाँ, स्केच की तरह ही चल रहा है. आई थिंक मैंने खोल के नहीं देखा है एक्चुअली कैसे फिल किया है. आपने हाँ. बोला निब को प्रेस करके, तो मुझे लगा शायद. हाँ, मतलब उसमें ये गीली इंक है. ओके. ये एक 4 कलर में आता है ये ब्रूस्ट्रो का. अभी उसमें और कलर्स भी आते हैं. इससे बेटर मुझे पोस्का का लगा है. पोस्का का मैं देखती हूँ. दिस इज पोस्का मार्कर. इसके अलावा मारवी इंडिया करके एक ब्रांड है, वो दैट इज आल्सो जापानीज ब्रांड. उनके भी अच्छे डेको मार्कर्स है, खास करके दे आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली. आप साइकिल आर्ट या फिर डायरेक्टली आप डोर या कोई भी सरफेस पे कर सकते हो. दीज आर पोस्का मार्कर्स, सो दे आल्सो वर्क ऑन एनी सरफेस. यू हैव टू चेक द कलर्स. बहुत अच्छे कलर्स है इसमें. 10 का आई थिंक पैक कुछ 1200 के अराउंड है. दे आर क्वाइट कॉस्टली दैट वे.
बट अच्छे लग रहे हैं मैम। हिम्मत करके मैं 2 लेके आई थी बिकॉज आई इतना लेके क्या करना है, अगर आपका यूज है उतना देन इट्स फाइन, अदरवाइज वो पड़े रहते हैं, बट ट्राई इजी करना टू था। यूज है वैसे, यस। कभी कभी लोगों के ब्रश के स्ट्रोक्स अच्छे नहीं आते, तो उनके लिए ये मार्कर्स आर अ गुड वे, स्पेशली फॉर लाइक मंडल एंड ऑल, दे आर वेरी गुड। ओके, अभी हमने ये मास्किंग से कवर कर दिया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्रेलिक पेंट लेना है एंड इन थोड़ा सा रह गया। So just apply random colors, okay? जो हमारे primary colors हैं, you can use sponge of course if you want to. एक पीस में एक कलर ऐसे हम करेंगे। So I have applied red here. मैम ये ब्रश के साथ नहीं होंगे रेड कलर? Other color is green. थोड़ा सा ही कलर लगना है, तो it's व्हाइट हमारा बैकग्राउंड है, इसलिए उस पे ये सारे बेसिक हमारे जो कलर्स है उस पे सूट होते हैं। सो आई हैव टेकन basic colors. If you want to mix 2-3 colors together, you can definitely mix them. जैसे अभी हाफ मैंने ग्रीन किया है, हाफ में मैं येलो यूज कर सकती हूँ। आई एम गोइंग टू यूज RYB and G, रेड येलो ब्लू प्राइमरी कलर्स एंड एडिशन टू दैट ग्रीन। आप चाहे तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट लुक्स वेरी क्लासिक अगेन एनी डे, बट ब्लैक जब आता है देन यू कैन नॉट पास लाइट थ्रू इट वेरी इजीली। तो अगर आप लाइटिंग यूज करने वाले हैं तो अवॉइड ब्लैक। गिव इट टाइम टू ड्राई। एंड अगर आपका बहुत गीला कलर है, आई मीन बहुत रनी कंसिस्टेंसी का कलर है, जो फेविक्रिल का जनरली होता है, कैमल फैब्रिका का कंपैरेटिवली थोड़ा थिक कलर होता है। तो अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो जो रनी कंसिस्टेंसी का है, तो क्या करो, आप उसको थोड़ा सा निकाल के रखो। आफ्टर 5 मिनट्स यूज दैट कलर सो दैट उसमें जो मॉइस्चर है थोड़ा कम होने लगता है, एंड देन इट्स इजियर फॉर यू टू स्प्रेड ऑन द सरफेसेस। क्योंकि ये सारे जो सरफेस है, जैसे बॉटल है, प्लास्टिक है, इट डजंट एब्जॉर्ब कलर ऑफ एनी काइंड, so it's difficult for us to fix the color quickly using blue. अभी मुझे लगता है थोड़ा सा जब छोटा सा text चाहिए। I'm adding one more line. You can keep pieces ready and then आप वैसे चिपका सकते हो। So you can experiment this. आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते। You can put spiral wave also masking को, क्योंकि ये अभी थोड़ी फ्लैटिश स्क्वेरिश रेक्टेंगल जैसा शेप है, so I couldn't turn it like swirl जैसा नहीं कर पाई मैं इधर। Vibrant colors. ये ब्लू ग्रीन नेचुरली मिक्स हो रहा है, which I like.
Just check your first bottle. वो अगर if it is dried, we will start that also. मैम ये ब्रश से कर सकते हैं हम एक्रेलिक कलर? Yeah, definitely. थोड़ा ड्राई होने दो कलर एंड देन आप ब्रश से कर, और फ्लैट ब्रश इज बेटर देन राउंड वन. There are maskings everywhere, तो मिक्स बिल्कुल नहीं होगा. That's the best part. रेड डायरेक्टली बॉटल से अच्छा लगता है. रेड कैमल फैब्रिका का है, बहुत अच्छा अप्लाई हो रहा है. स्कारलेट है एक्चुअली शेड. आप मेटालिक कलर्स भी यूज कर सकते हो, पर्ल मेटालिक, सो यू हैव नाइस शिमर ऑन द सरफेस. दैट्स आल्सो गुड आइडिया. अगर आपको थोड़ा मैट इफेक्ट चाहिए तो आप ये रेगुलर कलर्स इस्तेमाल करो. ये एक है पर्ल कलर मेरे पास इमीडिएटली साइड में. यूजिंग दिस, थोड़ा ऑड है शेड्स में, बट आई वांटेड टू शो यू द शिमर इफेक्ट. छोटा सा एक्सपेरिमेंट इधर कर. You'll suddenly see the shimmer there. ये olive color है. अगर ब्रश से देंगे तो कैसा होगा मैं दिखाती हूँ आपको. ब्रश से ये स्ट्रोक्स जो है ना, वो ठीक से उसमें वो मर्ज नहीं होते हैं. इसलिए आप थोड़ा सा ड्राई ब्रश टेक्निक इस्तेमाल करना. दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अप्लाई कलर. ये सरफेस आई नीड द मास्किंग there. You can use the masking over and over again. एक बार में ही फेंक देना ऐसा नहीं है, तो आप पहले वाला दोबारा यहाँ पे यूज कर सकते हो. You want to leave some part white, you can use some part white directly. Below. Flat brush one is very easy that way.
कौन सा रह गया है? Almost we've used all the color. Orange and green ने क्या करना है? Green. You can take shades of blue and green. अभी जैसे मानसून के colors हैं. You can use those also. Done. And I'll keep this for drying for 5 minutes. And then we will peel off the maskings. सेकेंड टाइप का कोई कौन कर रहा है? ये वाला. अभी आपके पहले बॉटल सूख गई है क्या? चेक करो सब लोग. Mine is still wet. थोड़ा ऊपर का पार्ट सूख गया है. Yeah, you're doing that. Yeah, nice. Let it dry easily. तो जो हमने पहले बॉटल कलर की है उस पे आप नंबर 1 यू कैन मेक सच फ्लावर्स. कोई भी आप ब्लैक कलर में कर सकते हो या फिर गोल्डन कलर में कर सकते हो. एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. इफ यू वांट टू हैव लाइक लिटिल फंकी इफेक्ट देन यूज ब्राइट कलर्स. इफ यू वांट लाइक थोड़ा डल इफेक्ट, अर्दी इफेक्ट, तो यूज ब्राउन्स, ग्रीन्स, वो सारे शेड्स. एंड अगर आपके फ्रेश है, वाइट बेस है आपका, तो उस पे ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, लाइट पिंक, ऐसे सारे शेड बहुत उस पे प्यारे लगते हैं. नाउ द इजीएस्ट वे दैट आई एम गोइंग टू शो यू. अभी वो गीला है सरफेस, तो मैं आपको ये कप जो है उस पे मैं बना के दिखाती हूँ. तब तक यू कैन टेक योर you can take earbuds or you can take your fingertips, dip them in color directly. This is very satisfying, honestly. Whenever you dip your fingertips in color, it's very nice moment for me. I enjoy it the most. And simply इसके आप flowers बना सकते हो ऐसे. ज्यादा कलर नहीं लेना है, अदरवाइज आपके टिप्स के जो उस पे इफेक्ट नहीं आता है. So don't take too much color. If you want a larger flower, keep the distance at the center more. See, looks so pretty. And then later, आपका जब ये complete हो जाए, तब क्या कर सकते हो? This is of course in case you want to make flowers, huh? I'm showing you options. You can use earbuds also in case you don't want to use your fingertips. ऐसे आप बाद में कर सकते हो. Like this will be in of course different color. मैं बस idea दे रही हूँ. You can use other color for shading also. जैसे अगर मैं suppose I want to use this teal color along with yellow. तो मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी दोनों को एक मेरे हाथ में.
And then I'll make a flower in both the colors. Totally depending on your liking, you can choose the colors. आधा साइड इसमें and आधा साइड इसमें आप भिगोना. You can use flat brush for this kind of effect. बहुत अच्छा आता है. आधे कलर में आप एक कलर से लोड करो and other side of you load it with different color. सबको मालूम है ना वो कैसे करना है? वरना मैं एक बार दिखा देती हूँ. I am also not a pro in that, but I have seen it in one workshop, so I can just show you. Now आधा कलर एक साइड से ऐसे. Okay, don't turn the bristles. That's the thing. Yellow on one part, dip it in one part yellow, and the other part in this one. Okay, जब आप ये कलर लोड करते हो आधे पार्ट में ये और आधे पार्ट में ये, तो लोड कैसे करते हैं इसको? जब यू टेक टू कलर्स एंड ऐसे ऐसे करते हैं. ओके, डोंट रोटेट इट. अगर आप रोटेट करोगे तो मिक्स हो जाएगा कलर. अभी ये दोनों साइड में लोड हो गए. देन यू कैन डू द शेडिंग वर्क. तो वो कांस्टेंट रहेगा शेड का आना थ्रू आउट. यू ट्राई दिस. ये भी थोड़ा ड्राई हो गया है मेरा कलर, तो एक साइड में एक कलर एंड सेकेंड साइड में कीप इट थ्रू आउट. डू द it's very nice. Just don't let the colors mix. Because it is a flat brush, it is possible. If you take a round brush, the colors will mix. अभी ये येलो का येलो रहता है लेयर एंड टील का टील रहता है. Only that is possible in flat brush. So this technique is actually used for painting fabric painting flowers. If you must have seen somewhere, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं. I don't know how to paint it really, but it's very impressive. तो ऐसे ऐसे लोड करना है. Then it अच्छी तरह से वो कलर सारे ब्रिसल्स में आ जाता है. Then it's easier for you to paint. And if you're using a round brush like this, which I have, most of them are round only, mine. Little water. For these ones, load your brush properly. पूरा ऐसे ऐसे आने दो. टिप आनी चाहिए उसकी, like this, and then you can do petals same way. That way it's easier for you to maintain the size of petals. If you're going to paint individual petals, that also you can do simply like this. These are all simple ones which you can actually do, and they look always very good. Keep some distance
एट द सेंटर. कनेक्ट करोगे तो बहुत रिजिड लगेगा. सो कीप सम गैप. यूज white for pollens and center portion. Looks nice that way. Keep simple lines. अब एक तो ये कर सकते हो. And the other thing that you can do is simple leaves का आप कर सकते हो. Start from thin stroke, press and turn. Thin stroke, press and turn. जो brush calligraphy करते हैं उनको ये पता है. So it's similar. Okay, तो ऐसे leaves बहुत अच्छे लगते हैं. Throughout the bottle you can do them in white, in black, in golden. जो भी आपको colors पसंद है आप वो उस पे use करो. Why I'm telling flowers and leaves? Because they are like universally loved and they are very easy to make. So that's one option. If you want to do mandala, of course you can do mandala. You can do dot art in it. You can do लिपन से अगर आपको उस पे थोड़े मिरर्स विरर्स लगाने हैं तो बट दैट बिकम्स टू मच आफ्टर अ पॉइंट. सो मिरर्स आप कहीं ब्रॉड सरफेस पे बड़े बड़े मिरर्स आप लगा सकते हो 4-5. दैट्स इनफ. And if you want to make mandala, make it on the larger surface, like throughout curves आएंगे आपके पूरे mix होके. So that's also good. Or else you can use layer by layer. अब पूरे layer में वार्ली pattern होता है, बहुत common है. And जैसे borders करते हैं हम वार्ली में, वैसे आप उस पे करते जा सकते हो. अब ये still wet, so I'm little hesitant to touch it. So ऐसे आप लेयर बाय लेयर कर सकते हो. मतलब ये एक बॉर्डर हो गई, ये दूसरी बॉर्डर, ये तीसरी. ऐसे आप कलर्स अलग पेन से ड्रॉ कर सकते. इवन यू कैन यूज परमानेंट मार्कर वंस इट हैज ड्राइड वेरी नाइसली. आप परमानेंट मार्कर या हमारा जो मोटा मार्कर है वो यूज कर सकते हो इस सरफेस पे, बट उसके लिए प्रॉपर ड्राई होना चाहिए. ओके. इवन वन आई थिंक आई वुड लव टू टेल यू ऑल, यू कैन यूज योर नेल पेंट्स ऑल्सो. अगर आपके पुराने नेल पेंट आपको खत्म करने हैं एक बार में, तो आप ये सारे इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. एंड दे आर वेरी इजी टू अप्लाई ऑल्सो. एंड रहते भी हैं उस पे एक्रेलिक कलर्स पे बहुत टाइम तक. I'll just show you. See. अभी तो ये छोटा सा है, इस पे आप कर सकते हो. एक तो कलर्स हम इसमें ढेर सारे होते हैं अपने पास, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक. आजकल तो ब्लू, ब्लैक सारे सारे आते हैं. So you can use your leftover nail paints. So it will be like total reuse and recycle, zero waste. Okay. So yeah. आप बॉटल आप किस तरह से ड्राई होने की बात करते हो. अभी सैटरडे संडे है आपके पास, तो आज पूरी रात उसको सूखने दो. कल चाहे तो आप उस पे और एक कोट दे देना अगर आपको थोड़ा कहीं पे ट्रांसपेरेंट लग रहा है बॉटल्स को. एंड देन on Sunday you can actually make another design on it. So let 24 hours to dry. You can draw trees also. Earbuds से आप black tree बना सकते हो इस पे. Very easy. Dip 4-5 earbuds together and then ऐसे आप कर सकते हो कलर में डुबो के. It looks very nice. And start from the bottom and ऐसे लेके ऊपर तक. You can draw stems and branches and show a tree. तो वो So let's see कहाँ कहाँ पे और कैसा ये निकल के आ रहा है. पूरा ड्राई नहीं हुआ है बट स्टिल.
मैम ये हैंड से कैसे निकलेगा कलर? सॉरी, हैंड से समझी नहीं मैं सुरभि क्या बोल रहे हो? मैम हैंड्स पे जैसे एक्रेलिक कलर आ गया है हाँ हाँ हाँ, तो कैसे निकलेगा मैम ये? पानी पानी से निकल जाएगा? हाँ, एक्रेलिक आप पानी में आराम से क्लीन कर सकते हो। ब्रशेस भी आपके जब तक कलर गीला है तब तक पानी में क्लीन कर दो इमिजिएटली। अगर वो सूख गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलता है ब्रश क्लीनिंग के लिए खास करके, तो अगर गलती से रह गया, बट इट्स इजी, पानी में जब आप गीला है तो यूज कर सकते Ma'am, sanitizer removes everything. या पर if the acrylic color has settled in your brushes like old one like 2-3 weeks long, then the Yeah. sanitizer work. गीला है तब तक हो जाएगा। See, it looks so nice. Plain bottle थी, so it looks very interesting. So you can put your flowers or anything that you want around. So इसकी tip already अभी white है, so in case you want to apply a dark color here you can, and then you can use it for keeping your brushes, you know, for your makeup items, for anything that you want. अच्छे flowers आप रख सकते हो रोज अपने आप से. The flowers that we are going to make in next week that you can keep. Easy. Okay, everybody, I hope you all enjoyed and do share the pics. आपने Yeah, कल sure. के सब अच्छे किए थे gift wrapping के. I loved everybody's gift wrapping. Very nice. And it's really useful for us. So that's the best part, like. Okay. Thank you and see you on Monday now. कल परसों छुट्टी रहेगी. Monday का आर्ट फॉर्म आइदर एक्सप्लोजन बॉक्स रहेगा या फिर पेपर फ्लावर्स. वो मैं संडे के दिन आपको मैसेज कर दूंगी या फिर कल ही कर दूंगी. अगर आपको कुछ सामान लाना है आप संडे पे ला सकते हो. ठीक है, मैं पूरे वीक का आपको शेड्यूल दे दूंगी मोस्टली टुमारो इवनिंग. Yeah. Excuse me, ma'am. Please tell the materials earlier, ma'am, because we are in a village. We are unable to buy the materials, ma'am. Actually, All I the have sent the materials are not. material. No, I had sent the list of all 10-day materials on day 1. Like Oh. सबको भेजना है. तो वो actually हाँ. पूरी list पढ़ी है सब लोग. Most of you have not read it, I guess. So you all keep on asking me. So just go through it. अभी हमारे 5 activities हो गए हैं. Next week अभी हमारा बाकी जो है explosion box, paper flowers, quilting, then we have name plate and कौन सा रह गया और एक कोई तो एक है able to recall. तो ये सारे हमारे 5 अभी बाकी है. तो उनके बस मटेरियल आपको लाने हैं. तो yeah, just go through the list. Okay, and send pics Okay, of ma'am. your. Bye bye. Good night, Bye. everybody. Thank you, ma'am. Good night. Anybody want to show? I did it. Yeah. Does anybody want to show? Or else you can send pics. Yeah, I'll Group send up. pics, ma'am. It's only not completed. Okay. Also, one announcement for all of you. I think most of you have filled up the forms. Those who haven't filled up the forms and done the payment, or they have not done the payment and filled up the forms, अब जब सब tally कर दो एक बार, cause some people's names I'm not able to find in forms, but they have done the. So जब तक आप पूरे forms और payment नहीं कर दोगे, मुझे हाँ. पता नहीं चलता. Also, one thing is, at least 7 sessions अगर आप सब लोग proper कर रहे हो पूरे अपने creations and you'll send me pics, I'm going to issue certificates to all of you. So just be more creative and we will have one prize also for like being consistent performer for all 10 days. Okay? तो उनको next workshop जो कोई भी होगा वो free मिलेगा. तो yeah, just stay tuned.
Okay. See you all on Monday. Good night. Happy week. Good night, ma'am.